their synopsis. They have not Sir, orally addressed the court, but they Sir, have मुझे कोई synopsis in writing. मुझे कोई सिनॉप्सिस नहीं मिला है, मुझे सिर्फ एक ही ECP का फॉर्मुलेशंस मिले। वही आर्गुमेंट है उनके क्या? बिकॉज मेरे ख्याल में आई प्रिज्यूम सिकंदर, दैट इज व्हाट सिकंदर वाज सेइंग, आई डोंट नो। जी, these are your written submissions. No, these are your written arguments. Okay. तो वो अगर वो मुझे आज दे देंगे तो मैं नेक्स्ट डेट पे उस पे सबमिशंस करता हूँ। पीपल्स पार्टी और अगर PMLN कोई सिनॉप्सिस देता है, let me start at least. Sir, in the end, if your lordships will recall, the learned counsel, who was the only counsel who argued for nearly all the 8 review petitions, and the significance is that the ECP adopted the arguments of a private counsel. This is very significant because this is one of my fundamental objections. The learned senior counsel has basically made 7 submissions before your lordships, which I will then wonder. If I may just state those for your lordship's benefit. Now, the first 3 submissions are basically about right of hearing and non-parties. His first submission was that the party which has been granted relief, which is PTI, was not a party. So how can a non-party be granted relief? Whether 187, the power under Article 187 can grant relief to a non-party, that would be a central question. 10 at least judges have decided that yes, relief can be granted to a non-party. One of the learned judges, the Honorable Chief Justice now, said that the matter is to be remanded. On what reasons? On what reasons? I'll explain. जरा सा मैं आपको overview दे दूं. तो पहला objection है. The second objection which has been raised, and I'll read it precisely because frankly I didn't understand this objection. The parties who had been denied as a consequence of general election a portion of reserved seats were not before the court. There is no such party जिसको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए थी, who was not before the court, because all political parties are parties to the appeal. So I don't really understand, but maybe wisdom will come to me. Roman 3. Which party was respondent? PTI was also party. जी नहीं, आपने कहा है जो objection. The parties नहीं, ये objection ये है कि जिनको deny की है वो कोर्ट के सामने नहीं थे पार्टीज, तो वो सारी पार्टीज तो थी जिनको डिनाई की है, PMLN, PPP, JUI, MQM, वो सब कोर्ट के सामने, शुरू से कोर्ट के सामने. The third objection. But PTI was not party. No, this is about denial, sir. ठीक है? Third objection. The parties in favor of whom the notification of ECP was struck down were not before the court. It's not clear whether he's saying all parties were not before the court or some of the candidates were before because a lot of the candidates were before the court. And it is irrelevant because those candidates were represented by their political parties. They, from the very beginning, from the ECP, those candidates जिनको रिजर्व सीट्स मिली थी, उनको तो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने दी थी. वो पॉलिटिकल पार्टीज सारी की सारी सामने थी. Number 4. These matters were not a matter of record before the Honorable Court. What was not a matter of record, one fails to understand. Number 5. Now this is a substantial objection. The timelines provided by the majority judgment were beyond the Constitution. This is a point also made by His Lordship Justice Mandokhel in his dissent. That is where he dissents. Partly, even on that he partly dissents. Roman 6. It was on the basis of these submissions, Article 225, Article 175, Sub-Article 5, and
Article 1B Roman 2 were not even referred in the majority judgment. So passing a judgment which moves away from any of these constitutional provisions and allocates these lists on the basis of doctrine or fidelity which doesn't have mooring either in the constitution or jurisprudence of this court were not warranted. A new point was raised on which your Lordship Justice Mazhar questioned that the petition before the Peshawar High Court, it was argued, was not maintainable because of the bar under Article 225. An objection which has never been raised before the Peshawar High Court. This objection was raised yesterday by Mr. Makhdoom. Yes, उनके ही objections मैं कर रहा हूँ. Now, there is a very simple answer to it which I'll give, but let me just state that this is an objection which is for the first time being raised. As far as the objection that it is violative of Article 175 sub-Article 2, that is a point which His Lordship Justice Aminuddin in his judgment has relied upon, and that is where I think it's taken from. Then the seventh objection which has been taken for review is that Article 187 did not give this honorable court any jurisdiction in the matter. It allowed this honorable court to dispose of a case in which jurisdiction was validly invoked by molding relief. Now, basically the argument here is that 185 does not create a jurisdiction. It creates a power. And that power can never be extended. Now I'm talking about this case. That power can never be exercised by granting relief to a party which is not a party to the proceedings. That is the argument which was put forward. So these are the 7 objections which have been raised regarding seeking review of this judgment. Now, my lord, for your lordship's benefit and to keep it very, very short, let me briefly take your lordship to the facts of the case. Just a couple of paragraphs, आपको पूरा overview मिल जाएगा, especially the honorable new judges. If your lordships may kindly say, and I'll read from the judgment, paper book से नहीं, ताकि जो facts हैं उन पे, अगर आपके loose part February 2025 दे दें. Citation. जी सर. Sir, PLD 2025, page 131. 131, sir. Which is the relevant portion? Sir. Sir, relevant portion is at page 139, para 14. I don't think anyone will dispute these facts. That is why I'm reading from the judgment itself. I don't want to waste your time. It gives all the facts. आपको एक bird's eye view में पता चल जाएगा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे end. In a couple of paragraphs. Para 14, sir. Page 139. Page 131. 39. जी. Para 14, your ladyship. You are heading in a relevant facts of the case. If I may read. नहीं, इसकी citation तो ये page 1 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है या क्या है? पेज 130. मैं वो हेडिंग है relevant facts. मैं असल में वो 8 मेंबर की मेजॉरिटी का मैंने पहला पेज दिया, वो 131 है. ये पेज 67 से है. जी 67 से है. जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, डिटेल रीजन, वो पेज 131 से शुरू होता है और सर 139. थैंक यू सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट पेज 139. जी बिल्कुल सर. 139 para 14, heading is relevant facts of the case. If all your lordships have it, I'll read, sir. Para 14. On 15 December 2023, the Election Commission of Pakistan Commission announced the election program for the general election 2024 to the National Assembly.
and the Provincial Assembly. According to this program, the last date for candidates to file nomination papers with the returning officers was 22nd December 2023, which was extended on that day to 24 December 2023. On 22nd December 2023, the Commission also decides, now this is important, that the then pending matter of intra-party elections of the political party Pakistan Tehreek-e-Insaf, the Commission determined that PTI had not conducted its intra-party elections in accordance with its constitution and election laws. As a result, the Commission declined to recognize PTI's intra-party elections and declared PTI ineligible to obtain its election symbol. This is where the controversy starts. Faisal, these were not an issue in this list, these facts and सर ये अगर फैक्ट्स का बैकग्राउंड में 3-4 पैराग्राफ से नहीं पढ़ूंगा, नए जजेस हैं सर, कंट्रोवर्सी नहीं समझ में आएगी, मैंने आर्ग्यू ऑन द मेरिट, तो जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस, इसलिए मैंने कोई यहाँ से फैसल ये बात क्लियर है कि ओनली द सिंबल वाज इलेक्शन सिंबल वाज नॉट अलाउड। बिल्कुल आप सही, पार्टी अपनी जगह बिल्कुल आप सही, जस्ट अ कपल ऑफ पैराग्राफ। ये जो सिंबल ना देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल नहीं दिया या इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन ने नहीं, उसको तो अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सिर्फ इलेक्शन मैटर था, पार्टी इलेक्शन, उन्होंने कहा पार्टी इलेक्शन नहीं होता। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कॉन्सिक्वेंस था कि सिंबल नहीं मिले, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं है। जी बिल्कुल आप सही, हमारे सामने जो था इलेक्शन कमीशन की पावर चैलेंज की बिल्कुल, और यही चीज जस्टिस मंदोखेल साहब ने और मेजॉरिटी जजमेंट में एक्सप्लेन किया हाउ द ईसीपी हैज मिसइंटरप्रेटेड द ऑर्डर, बट लेट मी जस्ट रीड द फैक्ट्स ताकि आपके सामने whether that misinterpretation was challenged by the PTI before any forum कि आप गलत इंटरप्रेट करो, this is not sadly not। एक मिनट सलमान, एक अपनी बात, एज ए रिजल्ट सैडली तो फिर कोर्ट पे क्यों उसको? सर मैं उस पे भी आपने एक पैराग्राफ लिखा है, शुक्र मैं पीटीआई का वकील नहीं हूँ ना, तो वो पैराग्राफ मेरे ऊपर भी लगता है। आप है ही पीटीआई के? नहीं सब छुपे भी नहीं सामने आते। As a result, the Commission declined to recognize PTI intra-party elections and declared PTI ineligible to obtain its election symbol. Although this decision was initially suspended on 26 December 2023, Peshawar High Court में सर वो challenge हुआ था, and subsequently set aside on 10 January 2024 by the Peshawar High Court. The Peshawar High Court set aside the order of the ECP, जो जिसपे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ईसीपी ने रिकॉग्नाइज नहीं किए। This court restored the Commission's decision on 13 January 2024. PTI candidates were thus not allocated the party symbol of PTI, but instead were allocated various different symbols that have been prescribed by the Commission for independent candidates. In the course of the election program, when the returning officers published the list of contesting candidates, Form 33, they mentioned PTI candidates as independent candidates. That is where the controversy starts. कि उनको कहा कि नहीं, पार्टी इन अ सेंस खत्म हो गई है। ये कोई ऑर्डर है? Is there any order in this behalf? जी मैं अब उस पे भी आता हूँ, मैं जरा समय अब ये कंप्लीट कर ले। फैसल इसको चैलेंज भी नहीं किया गया है। जी चैलेंज हुआ था, मैं 1 मिनट आता हूँ, वो सलमान एक्सप्लेन कर, दैट इज वेरी पर्सनल टू हिम, उनका नाम भी आएगा आगे अभी आएगा। he's a famous man now, he's a reported judgment. One of the PTI candidates, one of the PTI candidate, Mr. Salman Akram Raja, challenged this action by the returning officer of his constituency
before the commission. By its order dated 2nd February 2024, the commission rejected his challenge and declared him as independent candidate. उन्होंने वही बात की थी सलमान ने कि मैं पीटीआई का ही कैंडिडेट हूँ, आप बेशक जो भी मुझे सिंबल देते हैं, मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। तो क्या हुआ आगे इसको जरा कंप्लीट करें, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक देखिए, सलमान राजा साहब बैठे हुए जी, उन्होंने चैलेंज की उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने। जी जी, हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया, ऑर्डर को सेट असाइड कर रिमांड करके कमीशन को कहा आप दोबारा देख लो। राजा साहब ने उस रिमांड ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मीनवाइल कमीशन ने वो एक्सप्लेन कंटिन्यूशन जारी। जी जी, सही कह। मीनवाइल कमीशन ने दोबारा ऑर्डर किया इनके खिलाफ। जी जी, दैट ऑर्डर वाज नॉट चैलेंज। जी जी, मैं आता हूँ, जी जी, वो आपने चैलेंज नहीं। द पोल फॉर द इलेक्शन, ये बात दुरुस्त है कि ओनली सलमान हैड द लीगल understanding that they are misinterpreting the order of the Supreme. What do you mean? The rest of the whole law? मेरे ख्याल में उस वक्त समझ में नहीं आई, मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए जब गलती है तो क्यों नहीं माने सर। देखिए आपकी बारी आएगी, But Mr. Siddiqui, it is nobody's case that the PTI doesn't exist as a political party. जी बिल्कुल बिल्कुल, It has not been dissolved as already observed by this court, either by the Supreme Court or something. आपने कहा शायद खुद से समझ लिया था जी बिल्कुल सही। लेकिन ये भी बात नहीं है, पीटीआई ने भी अपने आप को ये नहीं समझ, इसलिए कि उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए, उन्हें पता था कि स्टिल दे आर पार्टी। वो ये समझ रहे थे, उस पे कंफ्यूजन आती है ना बाद में जब वो SIC ज्वाइन करते हैं उस पे। बट लेट मी कंप्लीट द फैक्ट्स बिकॉज आई कैन सी योर लॉर्डशिप्स हैव रियली वेरी क्विकली ग्रास्प्ड द फैक्ट्स ऑफ द केस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर आपको तो 2 महीने हमने इन अ सेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट सर खाया, तो इसलिए द पोल फॉर द इलेक्शन वाज देन हेल्ड ऑन 8th February 2024 and PTI candidates were notified by the commission as independent returned candidates in the notification published in the official gazette under section 98 of the Elections Act 2017. तो सिंबल नहीं मिला, इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया, उनको डिक्लेयर किया एज इंडिपेंडेंट्स अराउंड ओवर 80 filed nominations by declaring that they are members of any party. इस पे भी कंट्रोवर्सी है जो है कि कितनों ने किया कितनों ने नहीं किया, लेकिन बहुत ने किया। आफ्टर 39 पे कंसेंसस है। After the publication of Section 98 notification, a substantial number of independent returned candidates, 86 for the National Assembly, 107 for the Punjab Assembly, 90 for the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, and 9 for the Sindh Assembly joined a political party, Sunni Ittihad Council, to obtain the share of proportional representation in the seats reserved for Muslim women and non-Muslims in the National Assembly and the provincial assemblies of Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh. SIC, which is the Sunni Ittihad Council, then informed the commission of the joining of these returned candidates and requested the commission through 4 separate applications, letters dated 21st February 2024, to allocate to it its due share in the seats reserved for the women and non-Muslims in the National Assembly and the set 3 provincial assemblies. Actual list यहाँ से start. So they were under the understanding that they joined the PTI, they will not get reserved seats. So they joined another party, which is SIC. Para 17. अब उसके बाद ज्वाइन करके SIC then filed application for these leftover reserve seats. और उसी पे पैरा 17 में बड़ा important है, certain other political parties such as Pakistan Muslim League Nawaz, PMLN and Muttahida Qawmi Movement. At this stage, for correctness, these were not the leftover seats. Actually, someone challenged the allocation of these seats in the Peshawar High Court, and there were some injunctive orders.
Therefore, these seats were not allocated and kept for distribution in accordance with the proportionate representation. Let us not use the word leftover, seats which were not allocated. Let us say Not that. allocated. No, वो आगे तो आ रहा है ना, वो Let's- एप्लीकेशन जो जी, उन्होंने जी, जी। फाइल दी नहीं चले एप्लीकेशन. नाम No, you're right. SIC should not be given Leftover these तो फिर seats. इसी पे झगड़ा शुरू हुआ. नहीं, लेफ्ट ओवर है तो फिर कोई ये बात- दोबारा उनको नहीं जा सकती. नाम से कुछ नहीं है. शेक्सपियर वुड से a rose by any other name would still be a rose. तो these were not उसको the जो भी कह देते. आप आगे पढ़ेंगे तो आगे clear हो रहा है ना. जी, जी. लेफ्ट ओवर से थोड़ा सा कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है कि जैसे कि फिक्स फार्मूला है हाँ, कि इतने लोगों को इतने उससे ज्यादा नहीं मिल मिलेंगे, सकते. बकाया बच जाएंगे, बाकियों को नहीं मिल सकते. सपोज जैसे किया जा रहा है कि ये अगर किसी की एक सीट उसको कैसे 2 मिल सकती है, कैसे 3 मिल सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता. हमारा केस यही है. लेकिन let us not say leftover. Let us say seats which were not allocated. जैसे Para आपको 7. एक पॉइंट ये था ना कि क्या इनको खाली रखा जाए. जी जी अगर नहीं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. Para 17. जी. Certain other parties such as Pakistan Muslim League Nawaz (PMLN) and Muttahida Qawmi Movement Pakistan (NQMP) filed application opposing SIC request for reserved seats and prayed for the allocation of the reserved seats to them and other eligible political parties. Some individuals also filed applications opposing the SIC request and praying that SIC should not be treated as a parliamentary party. यानी इसमें तो इंडिपेंडेंट्स भी ज्वाइन नहीं कर सकते. कुछ एप्लीकेशंस ये थी. The political parties, Pakistan People's Party parliamentarians appeared before the commission as a pro forma respondent in the application filed by NQMP, while the political parties JUIP and Pakistan Muslim League appeared in response to the commission's notice and opposed SIC's request. So your lordship can see that this is a dispute about the seats which have not been allocated. इससे पहले let me clarify, PMLN, PPP, MQM have already been allocated seats according to their proportion. अब ये जो सीट्स हैं जो एलोकेट नहीं हुई हैं, जो SIC क्लेम करता है, जो बाद में इस कोर्ट ने कहा कि ये PTI को जाएंगी, उसके ऊपर भी ये बाकी पार्टीज ने क्लेम किया क्योंकि उन्होंने कहा ये भी हमें मिलनी चाहिए. This is the case actually. यही प्रॉब्लम ये था. उस वक्त उन्होंने ये सीट्स रोक ली ड्यू टू द लिटिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ. सर झगड़ा ये ECP ने यही डिसाइड किया. अब एक पॉइंट आप प्लीज अपने जहन में, क्योंकि आई विल आर्ग्यू मेंटेनेबिलिटी ऑन दिस. द डिस्प्यूट बिफोर द ECP is या तो ये between. पूरे काम कीजिए ना, ये पूरे फैक्ट्स पढ़ दीजिए ना. एक पैराग्राफ 18 रही है, वो भी पढ़ बिल्कुल के सही आगे कहा. चलेंगे. I stand corrected sir. Para 18. जैसे आज आप अपने पुराने फॉर्म में हैं. जॉब का स्टाइल आप अपने रिवाइज कर लेते हैं. तो काफी देर से आप इस इंतजार में नहीं थैंक यू सर. सारी रात ना सोए तो दिमाग फोकस रहता है. By its order dated 1st March 2024, the Commission rejected SIC's applications and decided that the reserved seats for women and non-Muslims, which had been requested by SIC but declined, would be allocated to other political parties as per the proportional representation system of political parties. Accordingly, those reserved seats, 19 for women and 3 for non-Muslims in the National Assembly, 21 for women and 4 for non-Muslims in the KPK Assembly, 24 for women and 3 for non-Muslim in the Punjab Assembly, and 2 for women and 1 for non-Muslim in the Sindh Assembly, 78 in total. It's a huge thing. It can it can make a minority government into a 2/3 government. In total, hereafter, referred to as the disputed reserves. This is the best one, disputed reserves. Not leftover, not allocated, disputed reserves. Were allocated to other political parties. इसमें एक डिसेंटिंग वोट था ECP के एक मेंबर का, जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये दोनों में से किसी को नहीं देनी चाहिए, खाली रखनी चाहिए, एंड इट विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम.
SIC challenged the Commission's order before the Peshawar High Court in writ jurisdiction. By its judgment dated 25th March 2024, the Peshawar High Court dismissed the SIC challenge and upheld the Commission's order. Hence, these appeals were filed by SIC with leave of the court. इसका मतलब ये हुआ, ये disputed seat still उस ऑफिसर प्रेसिडिंग रिटर्निंग ऑफिसर के डोमेन में to distribute it in accordance with Article 51 amongst those parties which are entitled. Yes, this is what your lordship said and what the majority has said. But just two, three paragraph more so that it is complete. Para 19. During the pendency of these appeals, PTI filed an application seeking its impletement in these appeals and submitting therein the facts and circumstances under which its returned candidates joined SIC. क्यों join किया उन्होंने? PTI submitted in its application inter alia that PTI issued party tickets to its candidates which were to be filed with the respective returning officers by 4 p.m. on 13 January 2024. ध्यान में रखिएगा सर, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 13 January. Denying that intra-party elections were wrongly held and as a consequence, symbol was not allotted. और ये रात तक चला था, ये ऑर्डर अनाउंस हुआ है रात में? जी रात को हुआ. The day fixed for allotment of election symbol, और वही दिन था जिस दिन election symbols allot होने थे. The Supreme Court took up the Commission's appeal against the judgment of the Peshawar High Court in the matter of PTI, intra-party elections and an election symbol on 12 January 2024 for hearing, which continued until late evening on 13 January 2024. 19.1. Faced with the possibility of an adverse decision by the Supreme Court, after 4 p.m. that day, PTI entered into an arrangement with another political party, PTI Nazriyati, under which party tickets were issued to the PTI candidates by that party to obtain a common symbol for PTI candidates to prevent the disenfranchisement of a large part of the electorate. ख्याल ये था अलग-अलग सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ेंगे तो इतनी कंफ्यूजन होगी इलेक्शन में कि कभी जीत नहीं सकेगी. दैट इज व्हाई these arrangements. ये फैक्ट्स कहाँ से प्लीडिंग्स तो नहीं थी कोर्ट के सामने. ये फैक्ट्स कहाँ से आई? ये फैक्ट्स कहाँ से आए और ये प्लीडिंग्स कोर्ट के सामने नहीं थी. ये इस एप्लीकेशन में थी. जी मैं पढ़ देता हूँ, मैं पूरा करने दे, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. इट्स अप टू योर लॉर्डशिप्स टू एग्री और नॉट टू एग्री. However, the same day, the chairman of PTI Nazriyati appeared on national TV channels and disavowed the tickets issued. At about the same time, the Commission also issued an order dated 13 January 2024 directing, important, the returning officers not to accept a political party's tickets for candidates who belong to another political party. ये order record है. Therefore, most of PTI candidates withdrew the tickets of PTI Nazriyati and presented PTI tickets to the returning officers. Some of the returning officers placed the same on file, while others refused to receive the same pending the decision of the Supreme Court. This is a factual controversy. Let me just say, because it's part of the majority judge. 19.2. Awaiting the decision of the Supreme Court, the Commission extended the time for submitting the party tickets and allotment of election symbols till 12 p.m. That day, the Supreme Court announced its short order at about 11 p.m. on 13 January 2024, whereupon the returning officers, now it's important, rejected PTI's tickets and by treating PTI candidates as independent candidates, allocated them different election symbols. इस पे झगड़ा है कितनों ने जमा किया था कितनों ने नहीं जमा किया था. The poll was held
on 8th February 2024 and PTI candidates won a large number of seats in the National and Provincial Assembly. These candidates were notified as independent return candidates by the Commission by relying on Rule 94 of the Election Rules 2017 and the judgment of the Supreme Court dated 13th January 2024. ये बहुत अहमियत होगा जब मैं आगे पढ़ूंगा, क्योंकि रूल 94 की एक्सप्लेनेशन है जो ये कहती है कि जिस पार्टी के पास सिंबल नहीं है उसको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती. तो इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन द पीटीआई वाज fearful that it will not get reserve seats. That is why separate section is also there. The Election Act, not on the rules, there is a section for claiming symbol. और वो एक्सप्लेनेशन भी स्ट्राइक डाउन की है मेजॉरिटी जजमेंट ने. इलेक्शन एक्ट और रूल्स है ना. कभी उस एक्सप्लेनेशन को किसी ने किसी लोअर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, इधर नहीं हुआ था. ये आपकी बात देखिए, उससे फैसल देखिए ना, उससे आगे चले गए. जब मैं एक लास्ट 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ, बस खत्म. आपने इशारा किया, मैं फौरन खत्म कर देता हूँ. जबरदस्त. आज तो पैरा पढ़ना 19 पॉइंट आपने अपने ऑर्डर बहुत पढ़वाए हैं. पूरा टाइम आपने अपने ऑर्डर पढ़वाने में बता दिया. Para 19.3. The Commission has earlier accepted in 2018 a political party, Balochistan Awami Party, which had not contested for general seats, eligible for the allocation of reserve seat. Therefore, PTI-backed return candidates join SIC, with which PTI had an ongoing relationship within 3 days of being so notified. तो ये बैकग्राउंड था इस कंट्रोवर्सी का कि किस तरीके से ये इलेक्शन से निकला. एक तो इसका इलेक्शन का बैकग्राउंड है जो आपके सामने आया, फिर इसका एक लिटिगेशन का बैकग्राउंड है जो आपके सामने आया कि एक ईसीपी का ऑर्डर है, फिर एक पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एंड देन देयर इज द जजमेंट अंडर रिव्यू. ठीक है, तो आई कंप्लीट माय फैक्ट्स एज फार एज दिस इज कंसर्न. नाउ let me come to my first point. My first point is, and it's a question which your lordship... First of all, you must explain whether you agree that SIC is not entitled for the reserve seat. I agree with the majority judgment, which says that SIC is yes, I agree. And agree that the persons that he joined you were then kept open to join any of the parties. Sorry? और उनका एक इतराज ये भी था कि why these 80% सारे जो इंडिपेंडेंट थे उनको क्यों ना फिर राइट मैं उस पे दिया जाए. लेट मी, तो क्योंकि मैं एग्री करते हैं कि वो आपसे वापस का. बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर. इस मेरी हार में मेरी जीत है सर. You just said कि you are representing SIC. इधर देखिए, उनकी तो आप हर बात जो है तो आपने पहली दफा सवाल पूछा, आपने जैसे ही पूछा मैंने आपको देखा जी. आप बताइए. जी नहीं, आपके ऊपर मेरे ख्याल में जजमेंट में ऑब्जेक्शन आ गई थी कि आप SIC के काउंसिल हैं या PTI के. जी. एंड द बेंच द कोर्ट हेल्ड के नहीं, ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक है. जी बिल्कुल सही. हाँ, तो आपको ऑथराइज किया PTI ने कि आप उनके लिए भी ये केस आर्ग्यू करें? सर मुझे ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है. देयर आर 3 रीजंस व्हाई आई कैन सपोर्ट. SIC को पता है कि आप उनके बिहाफ पे खड़े हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं, मैं उनके मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं. आई विल एक्सप्लेन. देयर आर 3 रीजंस. पहली रीजन ये है कि देखिए, आई एम अ रिस्पोंडेंट इन दिस केस. आई हैव 3 ऑप्शंस. No one can stop me. I can support the judgment. अगर कोई समझता है मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो मेरी डिसीजन है. I can oppose the judgment and support the reviews. कि अच्छा हो जी, आपने कर दिया, मेरे खिलाफ जजमेंट आप सेट असाइड करवाएं, मेरी सीटें वापस आ जाए, यानी मेरे प्रॉक्सी बन गए. या thirdly, I can be indifferent as a respondent. So my first answer is I have a right to support the judgment, the majority. My second answer is that your leadership will see that the judgment had declared that all these independents are now to be categorized as PTI.
The Election Commission for over a year. थोड़ा सा करेक्शन करिए या वो स्पेसिफिक पोर्शन आप बता दें. उन्होंने पीटीआई का डिक्लेयर नहीं किया उनको. उन्होंने कहा कि they are open. They may join any political party. आपको तो कहा था ना सर, आपको कहा था जिस तरह आपने कहा था. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर किया, जो 41 के करीब है. जी. उनके बारे में मेजॉरिटी जजमेंट ने ये कहा दिया था कि दे आर, उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि दे बिलोंग टू. उन्होंने ऑप्शन दिया था. सही, वो किसी भी पार्टी में जा सकते. बिल्कुल सही. और उन सब ने फिर आफ्टर द जजमेंट दे सबमिटेड डिक्लेरेशंस दैट दे वांट टू जॉइन पीटीआई. सो वो इलेक्शन कमीशन ने नेली ईयर जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की. सिर्फ मेरे ख्याल में 39 को जो उन्होंने अपनी रिव्यू में एडमिट किया है उसको कैटेगराइज किया उन्होंने पीटीआई. ठीक है ना. सो द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, योर लीडरशिप स्टिल रिमेन माय मेंबर्स. वो मुझसे ये डिमांड करते हैं कि जी जजमेंट इम्प्लीमेंट करें. आई रिप्रेजेंट देम, आई रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ एसआईसी बिकॉज द इलेक्शन कमीशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड द जजमेंट. कैसे रहे मेंबर्स जी आपसे डिटैच नहीं हुए? उन्होंने नहीं विद इन 15 डेज ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया. इलेक्शन कमीशन ने वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया. बट नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया. जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा दे कंटिन्यू टू रिमेन. देखिए, आफ्टर द जजमेंट ऑफ 8 members majority judgment, in compliance of that judgment, whether PTI has submitted some affidavits and Yes, declarations. they have. And The in members, their independent members who were treated independent by the 8 members majority judgment, whether they have submitted any They have. affidavit or declaration. They have. They have. And what they have mentioned in their declaration that they are going to join PTI. ठीक है ना, यही बात है ना. But- So the question is that if they have already submitted their affidavits or declaration to the ECP that they are now going to join the PTI, then what locus standi of the SIC remains here? Because your own members who earlier joined to you resile from your membership and they have submitted their declaration Because and their affidavit declarations have not to the been ECP. accepted. It may not be, but जब तक एक्सेप्ट नहीं होंगे ऑन द no, वेबसाइट. but where did you have derived this legal interpretation that unless They these are are still accepted? under the National Assembly as well as the Provincial Assembly. Their status is now as independent, not as a member of No, they are, the Election Commission recognizes them as SIC members. No, this court declared them independent. The 8 members. Sir, वो implement ही नहीं की. वो It's a implement different करेगा story तो whether it is किया ना. it has been implemented or not. But this court has said that they are the Sir, independent my submission. candidates, and they may file their application, declaration, affidavit, whatever it may be, before the ECP, and ECP will consider their applications. If this is the point only that we are urging before us, that since the order was not implemented, this is they not have come back to you again. No, this is not the case. point. Yes. Virtually what I understand. No, this is not the point. My first fundamental point is the objection of locus standi doesn't apply to respondents. No. It applies to petitioners. It applies to applicants. How can How you? No. I need the justification on this point only. When their self applied that they are now going to join PTI, then obviously their connection, their privy to you was ended at that time. It is terminated. Whatever the relationship between you and them was terminated. Let me for the time being accept what your lordship is saying. I am a respondent. No. You may. लेकिन फैक्ट्स तो ठीक आने. ये जो बात है ना, सिर्फ आपकी इस हद तक मैं आपकी बात मान simply लेता हूं. asking you कि जो आपका ये argument है ना कि since it has not been implemented, therefore they were reverted back to. I suspend that argument for the time being. Yes, I cannot digest this argument. So sir, आप digest नहीं कर, मैंने suspend कर दिया. Okay, thank you very much for that. So, Diki, perhaps you would also like to embark upon this point that whether there was some understanding between SIC and PTI, and if there was some, how does it bind the court, and what is the implications? Because time and again, the certain understanding keep on coming up before the nation. Sometimes they say they are my candidate, sometimes they are not my candidate. What was the understanding between the SIC and the PTI? मैं जब मेरिट्स पे आऊंगा सर तो मैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चन एड्रेस करूंगा. मैं जरा सा मेंटेनेबिलिटी पे कुछ पॉइंट्स करता हूं. Maintainability against the review. जी. So you agree that they are independent presently. They are Presently independent. Now the question arises that any one of them
has come forward before this court. मैंने कहा मैं सस्पेंड करता हूँ उस पे अपनी आर्ग्यूमेंट. कुछ और बात करूं. Whether anyone amongst them has come forward? अभी आपके सामने नहीं आया as an independent candidate. But let me I'll come to this point later. But let me first complete this. इसलिए मैंने कहा मैं सस्पेंड करता हूँ, गिव अप नहीं करता. नहीं, मगर सस्पेंड करने से तो आपने गिव अप ही कर दिया. नहीं गिव अप आपने नहीं किया. कहा है कि इस ओके दे आर इंडिपेंडेंट. इफ दे आर इंडिपेंडेंट एंड यू योरसेल्फ एग्रीइंग दैट दे आर इंडिपेंडेंट, देन द एसआईसी रोल इज नॉट एंडेड. सर नहीं एंड हुआ. मैं जरा सा आपको मैं इसको एड्रेस करूंगा. लेट मी कम प्लीज. जी सर. सो द फर्स्ट पॉइंट, एक आदमी अभी तक है जो उनका चेयरमैन है, वो आजाद था लेकिन एसआईसी में शामिल हुआ. ये आज तक पता नहीं चला कि वो आजाद क्यों खड़ा हो. बहरहाल नाउ ही इज द ओनली कैंडिडेट. सर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता. ओनली मेंबर. उनको क्या सिंबल मिला था? उनका पार्टी सिंबल जो था वो तो हॉर्स था. उनको क्या, किस सिंबल के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? अब पता नहीं, इनको याद नहीं. ये भी एसआईसी ने हामिद रजा साहब ने किस सिंबल पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था? माय लॉर्ड इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. नो इंडिपेंडेंट व्हाट वाज द सिंबल? बिकॉज़ उस वक्त भी मैंने बताया था, मुझे अभी याद नहीं. एसआईसी आपके मुझे अभी याद नहीं. उस वक्त मैंने उनका बताया. पार्टी सिंबल परहैप्स हॉर्स था. व्हाट माय लॉर्ड इज रिकॉलिंग. नहीं, लेकिन उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट किया था उनको कुछ और. मैं बताता हूँ. उन्होंने उनका स्टेटमेंट अगर कहें जी उन्होंने कहा कि मुझे पहले एक सिंबल दिया, फिर दूसरा, आखिर में घड़ियाल. मैं आता हूँ, बट दैट हैज नो सिग्निफिकेंस. बट आई विल कम बैक टू योर लेकिन अगर आपने वो 80 सीट्स अपने क्लेम करनी है ना, शायद फिर माइनॉरिटी व्यू पे आपको आना चाहिए. जी हमने तो आपकी इंटैक्ट रखी थी. माइनॉरिटी व्यू जो था सर, आपने 80 इंटैक्ट रख के उन 80 को बेसिकली इनफेक्टिव बना दिया था, क्योंकि 72 सीट चली गई थी. तो एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया. अगले फैसल 4 साल फैसल पता नहीं अभी तक भी शायद वो नहीं समझ रहे. फैसल एक मेरी 4 साल में जितने भी राइट्स अटैच्ड है विद दोज 80 सीट्स, वो एलिमिनेट हो गए आपसे. जी मेरा साथ में सवाल ये है कि इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी कि एसआईसी के जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं? अपनी पार्टी है, कोई उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं है. वो एसआईसी के कैंडिडेट्स थे ही नहीं उस वक्त. वो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट कर रहे थे, जिसको फिर जजमेंट ने क्लासिफाई किया कि ये इंडिपेंडेंट्स नहीं थे मेजॉरिटी, ये एक्चुअली पीटीआई कैंडिडेट. नहीं एसआईसी की जो हामिद रजा. नहीं बोलिए. नहीं प्लीज. नहीं प्लीज. हामिद रजा साहब जो थे कौन सी पार्टी से थे? एसआईसी से थे. जी एसआईसी से. उन्होंने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट किया? कोई ऐसा आपके क्लाइंट है, आपको कुछ अंदर की बात पता होगी. मैं जब मेरिट्स पे आऊंगा मैं वो जवाब दे दूं. मैं जरा सा आज एटलीस्ट मेंटेनेबिलिटी कंप्लीट कर असल जो बात आप जवाब अवॉइड करना चाहते हैं वो कहते हैं मैं बाद में जवाब. नहीं, मैं नहीं अवॉइड करूंगा. मैं जवाब अवॉइड नहीं करूंगा. मैं जरा सा मेंटेन, क्योंकि आज कुछ खत्म हो जाए, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ. प्लीज. सो एंड वो जब मैं पढ़ूंगा जजमेंट तो नजर आएगा शायद बहुत सारी ये जवाब अब रेलेवेंट नहीं है, शायद, मेरा ख्याल है. The first thing is, and this is something which your lordships have asked again and again, as to what kind of relief can be granted in this review. Now, my lord, to me, there are 3 categories of relief which can be granted. One, of course, is that the judgment can be set aside. The consequence of that would be that the appeals would be dismissed. The Peshawar High Court judgment as well as the ECP order will be upheld. That's the first thing which His Lordship Justice Aminuddin and His Lordship Justice Naeem Bhagwan have done. The second thing is that the majority judgment can be substituted by one of the minority judgments. Now, there are, apart from the simplistic dismissal judgment of 2 of their lordships, there are 2 other substitute views. One by Justice Mandukhil and the other by Justice Yahya. So that's the second possibility which can happen in this review. The third possibility, of course, is
and which does happen a lot in review, is that the judgment is set aside and the appeals are revived for re-hearing. So let me just cite judgments on this. The first judgment is 2025 SCMR 257. If your lordships will kindly see. जी सर, 2025 SCMR 257. इसमें हमने वापस भेजा है? नहीं सर, इसमें जो माइनॉरिटी व्यू था वो अपहोल्ड किया. If your lordship will see 268, side marked L, 8 line ऊपर से पढ़ रहा हूँ. For the same reasons as recorded in the minority judgment, we hold that the tribunal was not correct. Sir, 268 में L के ऊपर वाली लाइन से पढ़ रहा हूँ. For the same reasons as recorded in the minority judgment, we hold the tribunal was not correct and the High Court was correct in determining the receipts received by the petitioner for the lease of FLIC tapes containing computer software programs were not income from loyalty and were business profits as claimed by the petitioner in the tax returns. And then therefore we accept the present review, recall the majority judgment under review and dismiss the appeals of the respondent upholding the judgments of the High Court, which was the minority judgment. The second judgment, of course, on this is in which your Lord, more expressly it has been said, in which a number of your lordships are on the bench, PLD 2024 Supreme Court 1199. The citation, sir, PLD 2024 Supreme Court 1199. And if your lordship citation, please repeat. Ji sir, I'm sorry sir. PLD 2024 Supreme Court 1199, and your lordships may see the last page 1222 para 46. 63. जी सर, थोड़ा सा वो होता है कि वही the famous 63 agent. yes, and one of those cases where your lordship made a comeback, as they say. So you want again that I should come back? हो सकता है. As a backup option, I may consider that. Sir. Therefore, para 46. Para 46, last page. Therefore, for all the aforesaid reason, the majority short order and the majority judgment are set aside as they are against the clear language and mandate of the Constitution and are also contrary to the decision of the larger benches of this court. The conclusions arrived at by the judges who were in the minority are sustained. These are the reasons for our short order dated 3rd November 2024. And one judgment in which the appeals are revived. And then in that case, I and Justice Miakhil were. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है मेजॉरिटी को माइनॉरिटी व्यूज. Now, one of those cases in which both His Lordship Justice Aminuddin and Justice Mazhar was up, on the bench, and Justice Mazhar has authored it, where the appeals are revived. 2023 SCMR 737. So it's 2023 SCMR 737. If your lordship may see the last paragraph, para 9.
पैरा? जी सर। I had the pleasure of arguing before both your lordships, sir. Para 9, sir, last para. If your lordship above discussion. जी, sir, if your lordships have it, I'll read, sir. In the wake of the above, sorry, sir. Yeah, then it's review allowed. Sir, 7. जी, sir, para 9, sir, last para है judgment का. In the wake of the above discussion, the order dated 4/9/2020 is reviewed. Accordingly, CRP number 35K of 2020 is allowed, and CPLA number so and so is restored to its original number, which shall be fixed for hearing before a 3-member bench for leave to appeal. So all 3 options are before your lordship. Now, my lord. फैसल में एक छोटा सा सवाल है। जी जी। ये सलमान साहब ने जो अपना चैलेंज किया था कि दे वर नॉट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और कमीशन ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। जी जी। और फर्दर उसको चैलेंज नहीं किया गया तो उसको Now, let me come to my second proposition, which is, and I think this is very important because, especially in such cases where it's such an important review judgment, it's not a run-of-the-mill review judgment, is that one should be absolutely clear as to, ये रखो, सिर्फ ये वाले दो, सिर्फ ये वाले दो, ये दे दीजिए. What will be the grounds of review and what will be my grounds of dismissal of the review? अगर आप पेशावर हाईकोर्ट के आर्टिकल 186 नहीं, अब मैं आ रहा हूँ सर कि ये जो रिव्यू फाइल हुआ है ये किन ग्राउंड्स पे रिव्यू हो सकता है, एंड दोज ग्राउंड्स व्हिच हैव बीन पुट फॉरवर्ड आई विल बी चैलेंजिंग दोज ग्राउंड्स, बट फॉर दैट आई विल ओनली साइट 1 or 2 जजमेंट्स, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट जजमेंट व्हिच आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इलैबोरेट. फैसला अगर आप ये देखें ना कि पेशावर हाईकोर्ट ने वहां से जहां से जनरेट हुई सारी प्रोसीडिंग्स, पेशावर हाईकोर्ट ने क्या किया, क्या रिलीफ दिया है उनको, ये भी तो देख लें कि क्या. सर मैं जरा से ये मेंटेनेबिलिटी का खत्म है, आज ये खत्म करना चाह रहा हूँ एटलीस्ट बिफोर आई कम टू द मेरिट्स. जब तक दिस नॉट मेरिट, दिस आर फैक्ट्स. नहीं ये मेरिट्स, ये सर मैं उस पे इसलिए नहीं आ रहा. लेट मी सेट द स्टेज फॉर व्हाई आई थिंक दीज रिव्यूज शुड बी डिसमिस्ड. लीगल ग्राउंड्स पहले मैं आपके सामने रखूं. बेसिकली वी आर ऑन स्टेज, यू आर बिलो द स्टेज. हम तो सर इल्तिजा ही कर सकते हैं स्टेज की बात. जी जी फर्स्ट पे तो आपने 3 पॉइंट्स कहे कि ये रिव्यू में हो सकता है पर जी. अब मैं बता रहा हूँ क्या मैं वन ऑफ द मेंबर ऑथर ऑनरेबल चीफ जस्टिस फरीदी साहब, उन्होंने तो मैटर रिमांड कर दिया था कमीशन को. जी जी, वो भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है. मैं अपने अब ऑब्जेक्शंस 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा. इसलिए ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि पहले आपने फर्स्ट स्टेज पे कहा कि 3 इवेंचुअलिटीज हो. जी जी जी. एक ये हो सकता है कि आप रिव्यू डिसमिस कर दें. जी. दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको रिमांड करें, रिव्यू डिसमिस कर दें या अलाउ कर दें कंप्लीट. तीसरा ये हो सकता है कि दूसरा ये हो सकता है सब्स्टिट्यूट कर दें, और तीसरा हो सकता है रिस्टोर कर दें. ठीक है, अपील दोबारा सुनिए. नाउ लेट मी नाउ कम. अब आप बता रहे हैं कि रिव्यू जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है. जी, अब मैं अपने ऑब्जेक्शन 2 हिस्सों में डिवाइड करूं. आई विल एक्सप्लेन व्हाई ऑन लीगल ग्राउंड्स दीज रिव्यूज आर नॉट मेंटेनेबल, एंड देन ऑन द मेरिट्स आई विल एक्सप्लेन व्हाई द रिव्यूज शुड बी डिसमिस्ड. बट लेट मी फर्स्ट कम टू नाउ द फर्स्ट जजमेंट in order to understand what my grounds of maintainability is. It's a recent order in this CPLA number 402P of 2023. I rely on the additional note by His Lordship Justice Mazhar. If your Lordships may kindly see, शुरू में Justice मंसूर अली शाह की जजमेंट है 9 पेज तक. उसके बाद if your Lordships में see, इसमें देखना मेरी मार्क हुई भी हो. 9 पेज के बाद दोबारा फर्स्ट पेज शुरू होता है जिसमें हिज लॉर्डशिप्स नेम इज रिटन. इफ ऑल योर लॉर्डशिप्स हैव इट आई विल रीड. जी जी, यस. कौन सा पैरा?
Justice Mohammad Ali Madar साहब जी, और जरा 4 लाइनें देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. The precondition and yardstick for filing a review application is that the advocate signing the application shall specify in brief the points upon which the prayer for review is made, and shall add a certificate in the form of a reasoned opinion that the review would be justifiable in that particular case. This certificate is of critical importance. His Lordship and again in this order emphasized that. And this question... It is prescribed in the Supreme Court rules. Rule 4, Order 26. And it has consequences as well. If it is found that the application is frivolous. File a review petition within the framework and scope of review jurisdiction in the aforesaid rules. A penal clause is also embedded that in case the court concludes that the review application was vexatious or frivolous, the advocate or the advocate on record drawing the application shall render himself liable to disciplinary action. Now, if I may come to the next paragraph, sir. ये important है क्योंकि ये Please like and subscribe my channel. Thank you. basically summarize कर देता है. The survey of Order 47, Rule 1, CPC divulges that an aggrieved party may file an application for review of the judgment or order on the ground of the discovery of new and important information or evidence, which after the exercise of due diligence was not